Assalamualaikum dear student. In today's class, we are going to discuss the important SLO of unit stoichiometry, that is 1.4.1. Deduce the limiting reagent in a chemical reaction. ये SLO बहुत ही important है because इससे दो तरह के questions expected हैं exam में. The first one is CRQ, जिसमें numerical दिया जाता है to calculate the limiting reagent, excess reagent and amount of product. सेकेंड पर्सपेक्टिव इसका एमसीक्यूज की फॉर्म में है. एमसीक्यूज में आपको लिमिटिंग रिएजेंट मालूम करने के लिए या फिर इसकी डेफिनेशन से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन दिए गए. सो लेट अस स्टार्ट अवर वीडियो. और इस वीडियो के एंड में मैं आपको एक ट्रिक बता रही हूँ, एक फार्मूला बता रही हूँ जिसके जरिए आप किसी भी गिवन डेटा से लिमिटिंग रिएजेंट बहुत आसानी से मालूम कर सकते हैं. ओके, सो लेट अस स्टार्ट. टू अंडरस्टैंड लिमिटिंग रिएजेंट मैंने यहाँ पर 3 पिक्स लगाई हैं दैट आर रिलेटेड टू रिएजेंट. वी आर गोइंग टू कंसिडर दैट. The reagent 1 is milk, the reagent number 2 is tea, and the reagent number 3 is sugar. That is reagent number 3, right? So let us suppose कि मेरे घर पे मेहमान आए हैं and I am going to make tea for them and the number of person are 3. तो अगर 3 लोग आए हैं तो मैक्सिमम मुझे अराउंड 6 to 7 कप्स बनाने होंगे क्योंकि मेहमानों के साथ मुझे घर वालों को भी सर्व करना है. सो आई एम गोइंग टू चेक द स्टॉक प्रेजेंट फॉर द टी एंड आई एम गोइंग टू डिसाइड इधर दैट इज अ गुड प्लान और नॉट कि मैं उनको टी के साथ सर्व करूँ या सेकंड ऑप्शन पे जाऊँ. सो व्हेन आई चेक माय किचन तो वहाँ पर मैंने चेक किया कि मेरे पास शुगर अवेलेबल है बिकॉज इट इज़ द अमाउंट विच वी आर गोइंग टू परचेज एट द स्टार्ट ऑफ मंथ यूजुअली इन अ फॉर्म ऑफ केजी. सो हमेशा घर के अंदर शुगर एंड टी अवेलेबल होती है. बट द थिंग इज दैट कि मिल्क इजीली अवेलेबल नहीं होता क्योंकि ये एक फ्रेश प्रोडक्ट है जो कि हमें डेली बेसिस पर परचेज करनी पड़ती है. सो व्हेन आई सो इन माय किचन आई रियलाइज दैट आई हैव अ स्टॉक ऑफ शुगर and the tea bag, but milk is not present. Only 1 cup of milk is present. So is it possible for me कि मैं 1 cup milk से 6 to 7 cup टी बनाऊं? It is not possible. मिल्क नहीं है जिसकी वजह से टी की प्रोडक्शन लिमिट हो रही है. यानी कि ऐसा रिएजेंट जो कि हमें अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बता रहा है उस रिएजेंट को हम कहते हैं लिमिटिंग रिएजेंट. लिमिटिंग रिएजेंट इज बेसिकली व्हाट इट इज the reagent in a chemical reaction when 2 or more reactants are involved in a reactant which consume and the reactant which consume first due to which the reaction is stopped, it is called limiting reactant. यानी कि जब हमारे पास एक से ज़्यादा reagent included हैं किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में, जैसे यहाँ पर 3 रिएजेंट मिलकर एक प्रोडक्ट बना रहे थे और इन तीनों रिएजेंट में से अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट डिपेंड कर रही है मिल्क पर, तो ऐसा रिएजेंट जिस पे अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट डिपेंड करती है जो लिमिट करता है प्रोडक्ट फॉर्मेशन को, उसको हम कहते हैं दैट इज लिमिटिंग रिएजेंट. That was related to the first SLO in which we have to identify the limiting reagent by definition and by calculation. So let us move towards next part of it. Next part में एक numerical में आपको solve करवा रही हूँ related to limiting reagent. So here I added the numerical related to limiting reagent, जिसमें आपने बताना है कि in a chemical reaction limiting reagent क्या है, right? So if we are going to see the physical things like यहाँ पर मैंने ऐड किया एक और डायग्राम जिसमें हम easily identify कर सकते हैं there are 3 pair of breads और there are 2 piece of meat and 3 piece of we can say the salad leaf. तो अगर मुझे यहाँ से सैंडविच की प्रोडक्शन करनी है to make it more easy I'm going to give you the real life examples. अगर मुझे सैंडविच प्रोडक्शन करनी है तो मैं क्या करूँगी, मैं क्वांटिटी ऑफ द रिएजेंट पे देखूंगी कि हमारे पास कितनी कितनी क्वांटिटी मौजूद है, उस पर डिसाइड करूंगी कि मेरी प्रोडक्ट कितनी बनेगी. As the sandwich without meat is useless, we are not going to make that sandwich. So हम quantity of meat पर डिपेंड कर रहे हैं कि अगर हमारे पास 2 पीस ऑफ मीट अवेलेबल हैं और भले ही हमारे पास ब्रेड एक्सेस क्वांटिटी में अवेलेबल है लेकिन हमारी प्रोडक्ट जो है वो सिर्फ 2 सैंडविचेस बनेंगे बिकॉज दिस इज द लिमिटिंग रिएजेंट विच इज गोइंग टू लिमिट द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट. बट इन केस ऑफ अ केमिकल रिएक्शन वी कैन नॉट विजुअलाइज द थिंग as the chemicals are very tiny and we are not going to see them
with direct naked eyes, so we are not going to say कि सोडियम कार्बोनेट जो है वो कम है या फिर Na2S कम है जिसकी वजह से प्रोडक्ट जो है वो लिमिट हो गया। तो यहाँ पर हम किस तरह मालूम कर सकते हैं इन अ केमिकल रिएक्शन के लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा होगा, उसको मालूम करने के लिए एक शॉर्ट फॉर्मूला है। व्हाट इज द ट्रिक? The trick is that to find out limiting reagent, you have to take a ratio between given data and stoichiometric data. Given data and stoichiometric data में जिस भी reagent की वैल्यू कम आएगी वो limiting reagent होगा। How? Let us solve for this example. इस एग्जाम्पल में हमारे पास तीन reagents हैं. The first reagent is Na2S. The second one is Na2CO3, and the third one is SO2. ये तीन रिएजेंट हैं जिनकी हमें स्टेचियोमेट्री पर भी फोकस करना है। वाई टू फोकस ऑन स्टेचियोमेट्री? बिकॉज हमारा जो क्वेश्चन का ट्रिक है वो हमें बता रहा है कि जो गिवन डेटा है उसको हमने डिवाइड करना है स्टेचियोमेट्रिक डेटा से। सो टू डिवाइड इट विथ स्टेचियोमेट्रिक डेटा I must know the stoichiometry of the chemical reaction. Now, what is the stoichiometry of chemical reaction? The chemical reaction says me that 2 मोल सोडियम सल्फाइड के रिएक्ट करते हैं 1 मोल ऑफ सोडियम कार्बोनेट के साथ, और फर्दर 4 मोल SO2 चाहिए होते हैं, तब जाके हमारी प्रोडक्ट मिलती है। सो द स्टेचियोमेट्रिक रेशियो इज 2:1:4. Now, let us solve the limiting reagent problem with the help of formula. The formula tells us first we have to write the given data. The given data is got 200 ग्राम of each reactant. हमें चीज़ ग्राम में दी गई है तो हम इसको डिवाइड भी ग्राम से करेंगे. If it is given in mole तो हम डिवाइड भी मोल से करेंगे. So for this particular equation we are going to divide it with grams because we are provided with 200 gram of each. So I'm just going to write 200 with each of them, and then I would divide it with the formula masses, because stoichiometric mass or stoichiometric data is what when we are going to have the formula masses of all them. So for the formula mass of first, I'm going to divide 23 into 2. Sodium is 23. I'm going to multiply it by 2 because 2 sodium molecule are there. Then 32 into 1, and whole soul is going to be divided by multiplied by 2 because 2 moles are there. And second, that is Na2CO3. In Na2CO3 the sodium is again 23, which is going to multiply by 2, plus carbon is 12 and only one carbon is present, that's why 12, plus 12 into 1, or we can say 12, 16 into 3 because the mass of oxygen is 16 and 3 oxygen are present over there, so I have taken 16 into 3. Now, if I want to multiply it by stoichiometric ratio, so it would be 1, और कोई भी चीज़ 1 से multiply होने के बाद same रहती है, so we are just going to skip that step. For the third one, given data is 200 gram and the stoichiometric data is 32 into 1 plus 16 into 2, and the overall is multiplied by 4. So students, for your ease, I have just written the calculations over here. What we have done here, हमने पूरा जो फार्मूला मास था Na2S उसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आया 156, जो कि हमने इस फार्मूला के मुताबिक गिवन डेटा से डिवाइड करना है टू फाइंड आउट लिमिटिंग रिएजेंट. सो लिमिटिंग रिएजेंट के लिए गिवन डेटा ओवर स्टेचियोमेट्रिक डेटा इज 200 डिवाइडेड बाय 156. सेकेंड हमने किया Na2CO3 के लिए, जब हमने फार्मूला मास कैलकुलेट किया तो वो है 106. एज द गिवन डेटा इज सेम 200 ग्राम इन ऑल ऑफ देम, सो अगेन मैंने यहाँ पर 200 को डिवाइड किया है 106 से. इन द थर्ड वन द 4SO2 आर पर स्टेचियोमेट्री. सो जब हमने 4SO2 का मास लिया इट इज 256, एंड बाय द गिवन ट्रिक वी आर गोइंग टू डिवाइड इट बाय the given data. So 200 divided by 256. Now, जब हम इन तीनों का रेशियो लेंगे तो
ऑब्वियसली 256 इज अ लार्जर वैल्यू और सबको हम सेम से डिवाइड कर रहे हैं, सो ये वैल्यू जो है वो हमें सबसे कम रेशियो दे रही है. If it is going to give us the least ratio, that means this value is what? This value is going to indicate the limiting reagent. तो अगर हम पूछें कि इन तीनों में से limiting reagent कौन सा है, तो limiting reagent जो है वो SO2 है. क्यों? क्योंकि ये हमें given data divided by stoichiometric data का सबसे कम रेशियो दे रहा है, और जो सबसे कम रेशियो दे रहा है वही हमारा limiting reagent है. Hope you have understood that trick. Now we are going to move towards the advanced version कि इन तीनों में से limiting reagent अगर ये है तो amount of product कितनी बनेगी. Like if you are going to see over here, ये तीनों में से limiting reagent हमारा जो piece of meat है वो है, तो amount of product 2 sandwiches बन रहे हैं. But in a case of molecules we cannot directly predict कि अगर ये limiting reagent है तो amount of product क्या बनेगी. To find out amount of product, we have to go through stoichiometry, and we are going to solve one example related to it. ओके स्टूडेंट्स, सो जल्दी से हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं, जो कि आपका नेक्स्ट एसएलओ भी है, और इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं बाय कैलकुलेटिंग द एक्सेस रिएजेंट एंड अनरिएक्टेड रिएजेंट. राइट, सो नेक्स्ट एसएलओ इसके साथ मैंने इस वीडियो में मर्ज कर दिया है. ये एसएलओ हमें क्या बता रहा है? इस एसएलओ में आपसे पूछा गया है कैलकुलेट द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट and amount of unreacted excess reagent with the help of limiting reagent. क्या मतलब हुआ कि आपको एक तो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बतानी है, जैसा कि मैंने आपको पीछे एग्जांपल दी कि रिएक्टेंट से कितना प्रोडक्ट बन रहा है, वी हैव टू कैलकुलेट इट. और जो अनरिएक्टेड रहा है, फॉर एग्जांपल हमारे पास 3 पीस ऑफ ब्रेड थे, उनमें से हमने 2 यूज कर लिए, तो हम इजीली बता सकते हैं कि 1 पेयर ऑफ ब्रेड इज अनयूज्ड. सो यहाँ पर हमें अनरिएक्टेड रिएजेंट किस तरह से मालूम करना है, उसके लिए भी हम इस क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले इसका स्टेप है लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट करना, क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट ही हमें बेसिकली बताता है कि प्रोडक्ट कितना बनेगा. तो आपको जो डेटा दिया गया है इसकी मदद से आई वांट यू टू प्लीज पॉज द वीडियो एंड फाइंड आउट द लिमिटिंग रिएजेंट. होप यू हैव ट्राइड दैट. नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व इट फॉर यू कि लिमिटिंग रिएजेंट किस तरह से यहाँ से हम निकाल सकते हैं. तो the trick was, for limiting reagent, you have to divide the given data by stoichiometric data. Now, the given data over here is 20 gram of magnesium. So I'm just going to write 20, and 50 gram of oxygen. So I'm going to write 50 with oxygen. These are 2 reagent over here. This one is product. So reagent are under consideration. Now, what is stoichiometric data? I told you you have to calculate with the help of stoichiometry. So magnesium is 24 and 2 magnesium are there. So I'm going to multiply it by 2. What would be the stoichiometric data for 1 molecule of oxygen? It would be 32, right? So 50 divided by 32, 20 divided by 48 we must say, because इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 48 वैल्यू हो जाएगी. नाउ लेट अस फाइंड आउट कि हमारा लिमिटिंग रिएजेंट कौन है विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर. So students, as per the given data, you can see 0.41 is the less value than the 1.56. So we can say the magnesium which is present in the reagent side is limiting reagent, right? अब हम इस limiting reagent से amount of product कितना बनेगा वो मालूम करने जा रहे हैं. Whenever you are going to find out the stoichiometric calculation, there are 3 steps. The step number 1, I must say, is to write the concerns from the reaction. What are our concern? We are going to find out the amount of product, that is MgO from Mg. So the first step I'm going to write is Mg, that are 2 mole, and 2 MgO. Now, when you are going to write the first step, then with reference to their molecular mass, you have to calculate the stoichiometric mass over here. अभी हमने magnesium के लिए calculate किया था, that was 24 into 2, that is 48. And for MgO, what we can say, it is 24 plus 16
right? So it would be the total mass 24 into 16 into 2, so it would be 80, right? So I'm just going to write the final masses. आप जब भी स्टेचोमेट्रिक कैलकुलेशन करते हैं तो आप फार्मूला मासेस की मदद से उनके masses लिखते हैं. Now what are the final masses? I'm going to tell that 48 gram mg is going to produce 80 gram MgO. According to the stoichiometry, as I have just calculated, 2 मोल मैग्नीशियम के दे वेट 48 एंड 2 मोल मैग्नीशियम ऑक्साइड के दे वेट 80. सो मैं बता सकती हूँ कि 48 ग्राम Mg is going to produce 80 gram MgO with the help of balanced chemical equation. So the first step was writing the equation. Second is to calculate the mass. Now third is to add data. What data about magnesium is given in question? It is 20 gram. So as we know that 48 gram produce 80 gram, what would be the quantity of MgO if we use 20 gram, right? If we use 20 gram, so what would be the quantity? Here it is X. Whenever you have that type of situation, when you are going to relate stoichiometrically, I must suggest that you cross multiply the reagents among them with the products. So I'm going to have 20 in cross multiplication with 80. So it would be 20 into 80 is equals to what the second form we have 48 into X, right? So to make it in a single line equation, I would transfer the 48 in denominator, and we are going to have 20 into 80 divided by 48 is equals to X. यहाँ से जो x हमारे पास आएगा, that x would be what, that x is our MgO product that is going to produce by how many gram? 20 gram that are given in the question. So let us calculate it. What the calculators tell us, then 20 into 80 divided by 48, it is 33.3 gram. The product that is going to be produced by that stoichiometry, it is 33.3 gram. When you will solve this, you will have 33.3 gram of MgO as a product. Now, the first step we have found that the limiting reagent is what? The limiting reagent was Mg, and with the help of limiting reagent, we have calculated with the help of stoichiometry the amount of product that is 33.3 gram MgO. So I'm just going to write the final result here so that we can use it in next, like how to find out the excess reagent. So it was 33.3 gram of MgO and the limiting reagent was Mg. Now we are going to find out the excess reagent. Now excess reagent, how can we find out the excess reagent? We are going to do the reverse stoichiometry. Now what is the reverse stoichiometry? Like हमें पता है कि MgO is 80 gram, और according to this stoichiometric relationship in the given equation, ये 32 ग्राम के साथ रिएक्ट करता है to produce the stable product, राइट? MgO के 80 ग्राम 32 ग्राम के साथ अकॉर्डिंग टू इक्वेशन रिएक्ट कर रहा है. सो अगर मुझे रिवर्स स्टेचियोमेट्री लगानी है तो अगेन आई वुड कंसिडर द कंसर्न इज O2 and MgO. The O2 is 32 gram and the MgO is 80 gram. Now what was my product? I know the product is 33.3 gram. So if it is 33.3 gram, what amount of oxygen it might have consumed? So again, I'm going to use a stoichiometry. With the help of stoichiometry, what we would have, if I solve it over here with the help of stoichiometry, we would have x into 80 is equals to 32 into 33.2 grams, right?
So if I want to have the value of x, I would convert that into 32 into 33 divided by 80, and the answer for this would be the answer that is amount of oxygen used. So we are just going to calculate 32 into 33.3 divided by 80. So the amount that is used is 13.3 gram. 13.32. When you will solve it, you will have 13.32 gram of O2. That is what used. The used quantity is 13.32. Now, up till now, we have calculated what? We have calculated the limiting reagent by the formula. Then we have calculated the amount of product with the help of limiting reagent by stoichiometry, and the amount of O2 that is reacted with the help of calculated amount. We have the reverse stoichiometry over here कि 80 ग्राम को 32 चाहिए थे, तो 33 को कितने चाहिए होंगे ग्राम्स, right? Now another concern is here, the unreacted mass of oxygen. Now for the unreacted mass of oxygen, what should I do? For the unreacted mass of oxygen, I'm going to use the whole concentration, that was 50 gram, the whole concentration. It is the whole concentration. And what is the use concentration? We must say the use concentration is 13.3. So from 50, I'm going to minus 13.3, because whole concentration minus use concentration is unreacted. Okay. So the whole concentration is 50. If I'm going to minus 50 minus 13.3, the amount that has been produced, sorry, has been consumed. So the product which is the sum of this is 36.7 gram. What this 36.7 gram is, it is the amount of oxygen that remain unused. If I relate it with the previous metaphor, what was the previous metaphor in which we were having three breads? So out of three bread set, we have used two and one was unreacted. So the unreacted oxygen is going to be calculated with the help of total oxygen, that was 50 gram, and the used oxygen, that is 13. So total minus used is equals to unreacted, that is 36.7 gram of oxygen. Hope students you have enjoyed that video. If you have any question related to limiting reagent, you can ask me. There are some few tricks related to limiting reagent that are left. In next video, we will be discussing them. Thank you for joining. Allah Hafiz.